Good morning class 12. Today we will start the doubt session of the file handling. I told you how many types of the file. The type of file is text and binary. We having the function read and write. Okay. Both the file having the function read and write. This chapter is very important for your board purpose. That's why I am taking all the doubt session of this one. Okay. Come to the page number 199 and type B. Because type A may you have only the definition. Definition you can search from the book and write easily way. But in case of the programming, I need to tell you some part. Okay. So today we will discuss page number 199. Type B application based question number 1. Okay. The question number 1 is, students, my file equals to open poem.txt and then R, and then only we are going to read that particular file. Okay, now there is two sections giving students. My file equals to open poem.txt R, my file dot read, and another one section we have my file equals to open poem.txt R, my file dot read, and inside the parenthesis you get the number 100. Okay. Now it is asking what is the difference between both the section. Okay, students. So instead of writing these whole line, I am writing the main line which is different from both the section, students. The first previous section line is this, and the another section line is this. I am writing, and after that I will tell you what is the difference between. Students, let's see. These lines should be common for this one also, but these line is this one and this one is different. So what is that mean, students? That means only this is going to be a read whole file. I told you as an example of the read and write function, when you don't have anything inside the parenthesis, that only and only means you have to read or write that particular file the whole time from where is starting and where is going to be end. Okay, so this way the file will complete read, because it's a read file. As I can see, this is a poem.txt file. poem.txt की ये एक read फाइल है. सबसे पहले तो आपको ये समझना आना चाहिए कि ये फाइल कौन सी है. फाइल read है, ओके, क्योंकि आ लगा हुआ है. फाइल का नाम क्या है? poem.txt, and after that it's giving that empty parenthesis that doesn't have any value. If it doesn't have any value, that means the complete poem will be read, and whatever will be read, definitely it will be displayed. So that will display the complete poem. Okay. Now another section we have 100 only. Okay, 100 means now you we way to difference between both of them, students. 100 means only 100 line included the space, included the character sign, included the specific character, whatever is giving, all will be counted, because it will take the memory now, and whatever will take the memory, computer count everything, either it is a specific character or it is number or it is a character or it is string, whatever it is, but it is taking like just a segment wise memory. Okay, so this means 100 means the 100 numbers are there, 100, and now here we don't have any poem, but can you see the question number 2, students? If the file poem.bats.txt contain the following poem by Pramas Yogand, okay, then it is written of one poem, and afterwards see this line carefully, then what output will be produced by both the code fragment given in question number 1. Again I am repeating, please listen carefully. What output will be produced by both the code fragment given in question number 1? Means that in question number 1 we don't have a poem where we can count the number of characteristics which is present and that particular poem. But if you will see the question number 2 is just related to the question number 1, because it's saying ki I want, if the same tag we will write in this poem, then what will be the generated output. So for that, students, if we will put this line, means if we are giving the segment blank, this if you will make the segment blank,
and their fancy phrase boundaries with full stop. But with the unfound, boundless love, I behold the borderland of my India expanding into the world. Help, comma, with required space. Math of the religious, comma, with required space. Lotus, comma, with required space. Scenes, beauty and suggest. Okay, this complete poem will be read just because in previous section, in first section, you have this line. This line have no character limit. If there is no character limit, so by default the whole poem will be read and write, whatever the file type it is. If the parenthesis is blank, okay, make yourself very clear. अगर parenthesis के बीच में कोई भी नंबर मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर वही करता है जो उसको ऑलरेडी कमांड दी गई होती है, जो उसमें फीड होती है. मींस दैट विल already have a built-in function inside the computer. If it is open and nothing is inside that, that means it is going to take the whole poem. Okay, students. Now, in the next second, we have 100 unit. That means only 100 character will be count. So count your 100 with included space and specific character, with included the comma, required section, include all the things and count first 100 character. Whatever the first 100 character will be there, that will be your answer. I hope you understood this question number 1 and question number 2 properly. Now come to the question number 3, student. Consider the following poem bts.txt given above. What output will be produced by the following code fragment? Listen students, आपको first दिया हुआ है obj equals to open. पहली लाइन से we clear this thing कि एक तो फाइल का टाइप क्या है, ओपन है. दूसरा, किस तरह की फाइल ओपन करनी है, रीड फाइल को. ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा एग्जाम में कि फाइल का टाइप क्या है. फाइल का टाइप ओपन है या क्लोज है. अगर कभी भी आपको एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि उस जगह क्लोज लिखा होता है इंस्टेड ऑफ ओपन, तो दैट मीन्स कुछ डिस्प्ले होएगा ही नहीं. क्यों? जो चीज खत्म हो चुकी है वो आगे से सकती है. ठीक है, तो वही चीज है कि आपने क्लोज कर दिया, दैट मीन्स यू फिनिश योर टास्क. अगर आपका टास्क फिनिश हो गया तो वो डिस्प्ले नहीं करेगी, है ना. वही चीज है कि अगर क्लोज है तो आप कोई भी आउटपुट नहीं देंगे. इस बात का आप ध्यान रखेंगे. obj equals to open poem bts.txt रीड फाइल है. s1 obj.read line function. In my previous lecture I told you what is the difference between read and read line function. Read only read the particular segment of the memory and read line take all whatever written in that particular page. As to read line 10, again inside the parenthesis there is limit is given 10, means only 10 first 10 character included the space will be required to read. S3 equals to obj.read 15, again only 15, first 15. Always start with first 15, first 10, first 4, first 3. Okay, that doesn't mean कि अगर आपको ऊपर 10 दे दिया गया और नीचे 15 दे दिया गया तो आप 10 के आगे 15 स्टार्ट करेंगे कि 11, 12, 13 और फिर जब आगे आपका 25 आ गया तो आपका कंप्लीट हुआ. नो स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टार्ट विद अ वेरी प्रीवियस नंबर. Print S3. Now can you come? Print S3. What is the limit of S3 students? 15. Because S3 have obj.read 15. तो S3 की लिमिट क्या है? 15. तो फर्स्ट 15 कैरेक्टर आप लिख लीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है बच्चों. अब आगे पूछ रहा है obj.readline. रीड लाइन फंक्शन लिखा हुआ है और पैरेंथेसिस के अंदर कोई लिमिट नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर पूरी पोएम को रीड करेगा. क्योंकि अगर आप कमांड नहीं देते हो उसे तो उसके पास जो इंस्ट्रक्शन बिल्ट इन फंक्शन में होते हैं, यानी बाय डिफॉल्ट जब वो डिकोड किया गया होगा प्रोसेसर, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन डाले गए होंगे वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है. अगर आप उसको कोई स्पेसिफिक कमांड नहीं दे रहे हो, कोई टास्क नहीं दे रहे हो. ओके स्टूडेंट, तो रीडर लाइन में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बोला गया है कि व्हेनेवर वी हैव अ एम्प्टी पैरेंथेसिस दैट मींस ओनली एंड ओनली मींस दैट इज कि यू हैव टू टाइप या you have to read all the characters whatever present that particular page. Okay, now we will discuss the question number 4. Question number 4, student, consider the file poem predict output of the code fragment. File have been opened in file pointer file with
file.read. It's very easy. You can do within a minute, I think. It's very easy. You have to read a line function and you have to tell the answer. Okay, please go through with it. If any problem, please ask me. Now come to the question number 5. File equals to open constant C and name equals to phone number equals to file. It's very easy. देखो नेम और फोन नंबर को एंटर किया हुआ है, ठीक है, फाइल में ए दिया हुआ है, तो ए का टाइप कौन सा है? अब आपको दिमाग लगाना है कि टाइप कौन सा होगा। मैंने आपको बताया था, कई क्वेश्चंस मैंने आपको ऐसे कराए हैं प्रीवियस लेक्चर में, जब मैंने आपको बताया है कि जब रीड और राइट फंक्शन नहीं दिया होता है तो अपने दिमाग को खोल के हमें लगाना होता है कि ये रीड फंक्शन है कि राइट फंक्शन। स्टूडेंट्स, अगर ये नेम और फोन नंबर दिए हुए हैं रन टाइम के लिए, तो डेफिनेटली रन टाइम में आप रीड करोगे या राइट करोगे? अगर आपने कोई वैल्यू दे दी कि हम रन टाइम में देंगे, तो क्या रन टाइम में उसे रीड करोगे? बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। ओके, आप क्या करोगे? उसको राइट करोगे। तो ए की जगह फाइल का टाइप क्या आ गया? राइट फाइल। समझ में आया? तो अब ये रिप्रेजेंट क्या करेगा? whatever the name you will give and whatever the phone number will give, and included with this plus sign, okay, and included the string sign m. Now 6, write a code to open a created following file phone number. It's also easy. Consider the following constructs. What the name? हाँ, name as given. students, फाइल का टाइप ओपन है, रीड फाइल है, for in line if name in line, आपको सारा लाइन जो भी इस contrast.csv फाइल के अंदर होगा वो लाइन बाय लाइन लिखना है। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगी आपको, अगर आपको कोई ये चीज दी नहीं हुई है कि आपको कोई कोड वो नहीं दिया हुआ है, पैराग्राफ नहीं दिया हुआ और आपसे पूछ दिया कि 15 बताइए, तो जब आपके पास पैराग्राफ होगा तभी तो आप 15 काउंट करोगे, क्योंकि आप उससे वर्ड ही तो काउंट कर रहे हैं। इसमें अभी तक क्या हो रहा है? हम वर्ड ही तो काउंट कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो कि आपको पैराग्राफ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आपको नेम एंटर करा रहा है, फाइल का टाइप ओपन कर रहा है और फाइल को इनलाइन फंक्शन कर रहा है। इनलाइन फंक्शन का मतलब ये होता है कि लूप विल नॉट टर्मिनेट इटसेल्फ until it will not get the last output. Okay, loop will not terminate itself until it will not get the last output or the last limitation number. For an example, if name in file, if you have given a file limit, okay, so at the run time they are asking at least the file name section, students, okay, and it will read all the section. Why it will read all? Because inline function. Inline function always read all the section whatever is present. Okay. Now question number 8 is also easy. 9 is very easy, student. 10 is also very easy. Only you have to create one file proper. Read file बनानी है. File का नाम भी दिया हुआ है. आपको बस एक लाइन लिख देनी है. ठीक है. मल्टी लाइन के लिए आपको पता है read line function यूज करते हैं और सिंगल लाइन के लिए read function यूज करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपसे जल्दी से हो जाएगा. Okay. So that's all for today. We will discuss type number C from the tomorrow lecture. Thank you.